Hello and good morning, students. So, here is part 3 of components of food. Okay, so what we have studied in our previous classes about the nutrients that required by our body, that is carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and etc. So, now we'll move further. Okay. Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides water to our body. Okay, so what is given? What is the role of water? Water helps our body in absorbing nutrients from food, and also it helps in throwing out waste from our body in the form of urine and sweat. And normally we get water from drinking water or drinking liquids item, that are milk and tea. Also, in addition, we add water to most cooked food. Yes or no? Let's see if there is any other source which provides water to our body. So हम देखेंगे कि कोई और ऐसा सोर्स है कि जिससे हमें वाटर मिलता है. So now activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut into small pieces. Do your hands get wet while doing so? So what you have to do, you have to take a tomato or a fruit like lemon. आपको टोमेटो लेना है या फिर लेमन लेना है. You have to cut it into small pieces. आपको उसको small pieces में cut करना है and you have to see does your hands get wet or not. आपके hands हैं वो गीले होते हैं कि नहीं. Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? क्या आपने ऐसा वेजिटेबल देखा है जिसके अंदर वाटर नहीं होता? Do you find any fresh vegetable which does not contain any water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. So, what is given? Vegetables and fruits both contains water. They are the only one which provides water to our body and also meet the needs of water for our body. यस, सो वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर भी वाटर होता है एंड ऑल्सो हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें भी हम वाटर ऐड करते हैं. इसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वाटर जाता है. ओके, एंड ऑल्सो दे देमसेल्व्स कंटेन water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. So it is correct. हम food items cook करते में भी water डालते हैं and that also goes in our body. Okay. So you have to conduct this activity number 3 at your home. Okay. So now next is 2.3 balanced diet. Now we'll study about balanced diet. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अबाउट वाटर एंड वाई वी नीड वाटर, वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. नाउ विल सी बैलेंस डाइट. The food we normally eat in our day is our diet. So the food we normally eat in our whole day is called diet. जो हम रोज़ खाते हैं अपनी रेगुलर चीज़ों में उसको बोलते हैं डाइट. जो हम दिन भर खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाइट. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. So, we have to take healthy diet, and in our diet, there should be whole nutrients in right quantities for growth and maintenance of our बॉडी. सो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो भी राइट क्वांटिटी में है. सारे न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो इट इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी, और अगर कम होंगे देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल टू ऑफ द अदर. बहुत ज़्यादा भी नहीं एंड बहुत कम भी नहीं. इट शुड बी इन राइट क्वांटिटी. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. So, and also with the nutrients
In addition to nutrients, our body also needs roughage and water, good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. सिर्फ न्यूट्रिएंट से काम नहीं चलेगा, वी ऑल्सो नीड रफेज एंड वाटर. ये भी हमारा अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए. देन ऑल्सो वी कैन से दैट वी हैव टेकन अ गुड बैलेंस डाइट. यस. Do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet, what would depend on the amount of physical work that we do? Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. So what is given? Does people of all ages need same type of diet? Do you also think that a balanced diet depends on the physical work that our body does? Okay, so what you have to do, you have to prepare a chart, whatever you eat in a day over a period of a week, and you have to check that all the nutrients that are mentioned are present in one or other food items being eaten by you. आपको देखना है कि जो सारे nutrients present हैं, हमने पढ़े हैं, वो आपकी प्लेट में प्रेजेंट हैं कि नहीं, आप वो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं कि नहीं. सो यू हैव टू मेक अ चार्ट. आपको एक चार्ट बनाना है. ओके. पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स. व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स? मूंग एंड bengal gram. Fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. So what are these? These are the example of balanced diet. So one can eat this, and दिस इज़ अ बैलेंस डाइट एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव. ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स एंड मैनी मोर, दे ऑल प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. ये सारे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. एंड अगर हम ये खाते हैं, सो वी कैन से दैट वी हैव टेकन अ बैलेंस डाइट. हम ये कह सकते हैं कि हमने बैलेंस डाइट ली है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. So eating only the right kind of food is not enough. सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है, उसको properly बना के खाना is very much important. It should also be cooked properly. उसको cooked होना चाहिए so that उसके nutrients जो हैं वो loss नहीं हो, so that its nutrients are not lost. So right kind of food and properly cooked food is very much necessary. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? So you know most of the nutrients are lost in the process of cooking and preparation. हम जब खाना बनाते हैं तो उसके जो nutrients हैं वो चले जाते हैं. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. So what is given? We should first wash fruits and vegetables, and then we have to cut it. If we cut fruits first and then we have to wash it, then all the vitamins of fruits are lost. So we should not do it. पहले हमें wash करना चाहिए, फिर हमें cut करना चाहिए fruits को. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. So what is given? The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals, and also repeatedly washing of rice and pulses may रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो स्किन होती है उसके अंदर भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. और अगर हम राइस को रिपीटेडली वॉश करते हैं, राइस एंड पल्सेस को, सो उसका रिजल्ट क्या होता है? दैट विटामिन्स और मिनरल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो चले जाते हैं. सो वी शुड नॉट डू इट. वी शुड ओनली वंस एंड ट्वाइसली वॉश द राइस एंड pulses, not repeatedly we have to do it. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier
to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. So we all know that cooking makes the food very tasty and also it make easier to digest. But at the same time also cooking also result in loss of certain न्यूट्रिएंट्स. हमें पता है कि कुकिंग टेस्टी बनाती है फूड को, बट कुकिंग जब हम करते हैं इट ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं वाइल कुकिंग. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कुकिंग के अंदर वाटर यूज़ करते हैं तो जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं वो चले जाते हैं. सो वी शुड ओनली यूज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? So vitamin C is the one which easily gets destroyed during cooking by heat. So would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? So क्या सेंसिबल नहीं होगा कि हम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स भी हमारी डाइट में लें? इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड ऑल्सो गिव न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. ओके, सो नाउ व्हाट डज बोजो थिंक? Bojo thought that the fats would be the best foods to eat all the time. A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food. So what does Bojo thought? That fats are best foods to eat all the time because a calorie of fat will give more energy than a calorie of carbohydrate. बोजो ने क्या सोचा कि जो फैट है वही खाना चाहिए, वो सबसे अच्छा खाना होता है बिकॉज ज़्यादा एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. सो ही एट नथिंग बट रिच इन फैट्स. फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा. उसने क्या खाया? सिर्फ फैट्स रिच फूड, दैट आर समोसास, पूड़ी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है इसने सही किया? नो, ऑफकोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. अगर हमने ज़्यादा fat rich food खाया so we will suffer from a condition called obesity. हमें obesity हो सकती है. We should take all the nutrients in right quantity. We should not take only one nutrients. हमें सारे nutrients चाहिए, वो भी proper quantity में. Okay, so the next one is 2.4 deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. So a person is getting enough food, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from a deficiency. सिर्फ खाना खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, खाने में अगर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है और ये ज़्यादा टाइम तक चल रहा है सो हमें क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. अगर हमारे बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा nutrients नहीं जा पा रहे हैं so it can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. जो disease हमारे बॉडी में होती हैं, why? Because we have not contained a proper nutrient that are called deficiency diseases. If a person does not get enough amount of protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. So what is given? If a person has not contained protein in his or her food for a long period of time, so what he will suffer? Stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. अगर किसी भी पर्सन ने बहुत टाइम से प्रोटीन अपनी डाइट में नहीं लिया है तो उसे क्या हो सकता है? फेस पे सूजन आ सकती है, स्किन की कोई डिसीज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है. ओके, if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin, so weak that he or she may not be even able to move. अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों नहीं लिए हैं सो व्हाट विल हैपन? द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली. सच अ पर्सन इज
becomes very weak and he or she may able to not even able to walk. वो सिर्फ मूव भी नहीं कर सकता है, वो बहुत वीक हो जाएगा अगर किसी ने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों अपनी डाइट में नहीं लिए हैं तो. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases, disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. So if you have not taken vitamins and minerals, it may result in certain diseases that we will study in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. If we take a proper balanced diet, then all these deficiency diseases can be prevented. In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrients needed by our body. So what we have learned, we should take balanced diet in our body. All the nutrients should be present in our plate. हम जो भी दिन भर खाते हैं, all the nutrients should be present in our diet. Otherwise, we'll suffer from deficiency diseases. So now take a look at table 2.3. Some diseases, disorder caused by deficiency of vitamins and minerals. So vitamin A, if we have not taken vitamin A, that what will be the result? Loss of vision. पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. हमारी आंखों की रोशनी जो है वो जा सकती है अगर हमने विटामिन ए नहीं लिया है. विटामिन B1, बेरी, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वॉक. So if we have not taken vitamin B1, what will be the deficiency in our body? Berry. And what will be the symptoms? Weak muscles and very little energy to work. हमारे पास एनर्जी बचेगी नहीं काम करने के लिए. Vitamin C, what will be the deficiency? Scurvy, bleeding gums would take longer time to heal. So if you have not taken vitamin C, what will be the deficiency? Scurvy. क्या हो जाएगा? हमारे gums जो है bleeding करेंगे and बहुत time लेंगे उनको heal करने का. Vitamin D, rickets. What will the deficiency? Rickets. And what will be the symptoms? Bones become soft and bent. हमारे जो bones हैं वो बहुत soft हो जाएंगे और bent हो जाएंगे. This is the symptom of lack of vitamin D. Now calcium, bone and tooth decay. Weak bones and tooth decay. हमारे bones जो हैं वो weak हो जाएंगे. Iodine. What will the deficiency? Goiter. Glands in the neck appear swollen. Mental disability in children. So this is the symptom. मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रंस में. आयरन, अनीमिया हो जाता है एंड सिम्टम इज वीकनेस. सो येस, वी शुड टेक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स for our body and also to prevent these diseases. Okay students, so I hope you all understood the chapter. We'll meet in next class with the new chapter. Okay students, so bye all of you. Thank you very much. Have a nice day.